So this is what we had done yesterday, okay, in a very rough manner. तो आज आप इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिए, how that distributive property is applied in the case of dot product when the vectors are written in the form of rectangular component form or orthogonal component form. In your entire grade 11 and grade 12 physics, you will come across many situations where you have to find the dot product of two physical quantities which are vector in nature. Okay, and there the geometry between them, that is what is their magnitude alone is not sufficient, but the angle also is also sufficient, is required to find the new physical quantity which is the product of the two. बात समझ में आ रही है? कल किसी ने पूछा भी था कि सर 2 into 3 तो 6 ही होता है, हाउ डज इट मैटर? ठीक है ना, बट इट मैटर्स इन द केस ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट, because in dot product you have to also consider this, that cos theta term, that cos theta is coming because of the angle between the two. अगर वही एंगल 90 डिग्रीज हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, और अगर वही एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है, और वही एंगल थीटा अगर आपका -180 होता है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, मिनिमा आता है, राइट? दैट वी हैड सीन यस्टरडे. अब उसके हम 4 एग्जांपल्स है दैट आई एम शोइंग यू. ओके, सो प्रोबेबली आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जस्ट टेक इट डाउन एंड विल सी वन बाय वन इन न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन. So physically the meaning of work is, let's say you wish to move some body. इस बॉडी को आप मूव करना चाहते हो तो क्या करोगे? यू हैव टू इम्प्रेस सम फोर्स ऑन इट. तो आपने फोर्स लगाया इस पे, एंड दिस बॉडी मूव्स इन दिस डायरेक्शन. ओके, so you applied this force F and it got displaced in the direction of force. इसका मैग्नीट्यूड F है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड S है. So as per the definition of work done, it is defined as force into displacement. That is what you have studied till grade 10. आपने कभी भी एंगल को आई थिंक कंसिडर नहीं किया होगा. ओके, नाउ if let us say body is not allowed to move in this direction purely, it moves in certain other direction. For example, let's say this is a toy car, okay, and it is kept on a surface, horizontal surface, and you are pulling it. तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो? सर्टेन ऑब्लिक पोजीशन. और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एस उसका कुछ एंगल बना रहा है थीटा. नाउ हैड दिस बॉडी बीन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब तो हम एफ इंटू एस लिख देते हैं, बट अब ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज
body is not moving in the direction of force. So work done by this force for this displacement will be Fs cos theta. Fs cos theta. Okay. Now how this value came? You will take the component of F in the direction of displacement. तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और फोर्स का जो ये कंपोनेंट है F पैरेलल लेट अस से, that is F cos theta. So this body got displaced not because of F. It got displaced because of the component of F in the direction of displacement. तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है to get the displacement. There is another component of force that is perpendicular, F perpendicular, but because the angle is 90 degrees, the work done by this force on the displacement will be 0. So you will consider only the component of force in the direction of displacement to define the work. Is this clear? I hope सबने लिख लिया होगा ये. Now the next case is that of power. Okay, so first is work, second is power. Now power is defined as rate of doing work or the rate at which force does work on the body, or the energy, that is the rate at which energy is gained by the body. So in certain situations you have to find the rate of change of doing work or the rate of doing work or rate of change of energy of the system. So therein the power will be defined in the terms of dot product. Okay, now this term is new for you, dw by dt, right? So this has got certain mathematical significance which we will deal in much detail in your chapter mathematical tools, which we will be doing the next chapter. Okay, तो अभी इसको आप as it is लिख लीजिए, ठीक है? So I'll give you another 2 minutes to write the entire slide, and we'll explain each term when the suitable time comes. There is a region of space, as you can see here, where some kind of physical quantity exists. In this case, that quantity is E. E is either electric field or gravitational field. Now, if you wish to find out the flux passing through it, flux means number of field lines that pass through it, then you have to multiply the electric field E with area A. This is how it is defined: electric field or gravitational field with area A. And basically your electric field is nothing but flux density, like how closely they are spaced relative to each other. अगर ये सारे के सारे एरोज बहुत पास पास में होंगे तो यहाँ का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर ये दूर दूर होंगे तो इनके बीच में अगर सेपरेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है ना? तो फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ता है इन द लेटर चैप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड. अब अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, let's say my field lines are moving in this direction, but the area that I am considering, the normal to that area makes an angle theta. Okay, so this is the normal to the area, and this normal makes an angle theta with the direction of electric field. Then the flux passing through it, the total flux passing through it will not be through this total area. It will be only through the area which is projection of this area into this plane. तो अगर ये जो plane आपको दिख रहा है बैक साइड में, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये एरिया जो इसके बैक साइड में बन रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे मिलेगा आपको? ऐसे मिलेगा, ठीक है? आई होप यू कैन सी दैट. लाइक अ प्रिज्म. या इट्स काइंड ऑफ अ प्रिज्म. तो ये जो प्रिज्म का स्लांट सरफेस है, उस स्लांट सरफेस का हमने प्रोजेक्शन लिया है एक वॉल पे. तो दिस इज द वॉल. दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस. तो अगर मैं इस एरिया को ए कॉस थीटा को
E से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट द फ्लक्स. So A cos theta times E is my flux, which can be written as E dot A. Now what is A? A is this vector. The vector which is perpendicular to the area. The vector which is perpendicular to the area. Okay, that means normal to it is the direction of that area vector. So there are certain things that you will come to know later on. But this is how you will be required to find out dot product in certain situations. Is that clear? तो आपने ये सब लिख लिया होगा, I hope. Now let's do it or apply the concept in one problem.